हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज बायस स्टेबलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी फैक्टर्स। सो व्हाट डू वी मीन बाय स्टेबलाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस एंड वेरिएशंस इन द ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स इज नोन एज स्टेबलाइजेशन। अब बात करें हम लोग कॉजेज ऑफ अनस्टेबलाइजेशन की, सो वी नो दैट अगर हम लोग हमारे कलेक्टर करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करें, that leads to shifting in our Q point. And we know that our collector current variation depends on two parameters. The first one is change in beta, and we know that IC is equal to beta times IB plus beta plus 1 times ICBO. तो कोई भी चेंज अगर बीटा में आता है, बिकॉज ऑफ दैट हमारा कलेक्टर करंट चेंज हो सकता है. एंड द सेकंड पैरामीटर इज चेंज इन टेम्परेचर. एंड वी नो दैट अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीज करेगा, ड्यू टू विच हमारे कलेक्टर करंट में चेंज आएगा. If we talk something about specific, so we know that with every 10 degree Celsius increase in temperature, हमारा ICBO डबल होता है. Now with change in temperature, हमारा जो VBE वोल्टेज होता है, that also decreases 2.5 millivolts per degree Celsius in temperature. And we know that कि अगर हमारे VBE में change आएगा, that will also lead to changes in our base current, because we have seen the input characteristics in which we have seen the variation between the input current and input voltage. And from this expression we can say that अगर हमारे बेस करंट पे फर्क पड़ता है, बिकॉज ऑफ दैट हमारे कलेक्टर करंट पे भी फर्क पड़ेगा, एंड ड्यू टू विच हमारे क्यू पॉइंट में शिफ्टिंग टेक प्लेस करेगी. Now let us talk about what is stability factor. So the rate of change of collector current, which is IC, with respect to the leakage current, which is ICBO, at constant input voltage, which is VBE, and amplification factor beta, is called as stability factor. So S is equal to DIC by DICBO at constant VBE and beta. Now हमारे पास तीन टाइप के स्टेबिलिटी फैक्टर्स होते हैं. This is known as S, this is known as S prime, जहाँ पे we have our equation as DIC by DVB at constant ICBO and beta, and then lastly we have S double prime, which is equal to DIC by D beta at constant ICBO and VBE. Now one point which we have to remember is that जितनी कम वैल्यू एस की होगी, दैट मीन्स आवर सिस्टम इज मोर स्टेबल. सो एग्जांपल वी हैव ट्रांजिस्टर 1 जिसकी S1 की वैल्यू 8 है, एंड वी हैव ट्रांजिस्टर 2 जिसकी S2 की वैल्यू 5 है. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट द लोअर वैल्यू इज इन द केस ऑफ ट्रांजिस्टर 2, जिसका मतलब हमारा ट्रांजिस्टर 2 इज मोर स्टेबल. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन. तो इस केस में वी हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स. सो द फर्स्ट स्टेप इज to apply KVL in the input loop. तो यहाँ पे जब हम लोग KVL अप्लाई करेंगे, we will have our equation as VCC minus IBRB minus VB is equal to 0. So from here we can calculate the value of IB, which is equal to VCC minus VB by RB. Now the step 2 is we have to use this particular equation which we have been using in the previous videos. That is IC is equal to beta times IB plus beta plus 1 times ICBO. अब यहाँ पे हम लोग IB की वैल्यू को पुट कर देंगे. सो वी विल हैव आवर इक्वेशन विच इज IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स VCC माइनस VB बाय RB प्लस बीटा प्लस 1 टाइम्स ICBO. एंड इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 2 मान के चलते हैं. नाउ द स्टेप 3 इज वी हैव टू डिफरेंशिएट द इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू IC, कीपिंग द VB एंड बीटा एज कांस्टेंट. सो अगर हमारा VB एंड बीटा कांस्टेंट है, एंड इन आवर सेकंड इक्वेशन यू कैन ऑलरेडी सी दैट हमारा VCC एंड RB already constant है. So we just have to differentiate now. So we will have our equation as DIC by DIC is equal to beta times RB, हम लोग बाहर ले लेंगे because it is constant. Now differentiation of VCC minus VB with respect to collector current plus beta plus 1 times differentiation of ICBO with respect to IC. Now we know that VCC and VB हमारे constant है, so they are going to be equal to 0, and from this particular formula of stability factor, we can see that DICBO by DIC can be written as 1 by S. तो यहाँ पे हमारा हो गया 1 is equal to ये पूरा पार्ट हमारा हो गया 0, and this can be written as beta plus 1 times by S. So from this we can get the value of stability factor as beta plus 1. अब बात करें हम लोग जनरल एक्सप्रेशन की, so उसके लिए we just have to differentiate our
first equation with respect to IC. So after that, we will have our equation as 1 is equal to beta times dIB by diC plus beta plus 1 times dICBO by diC. So from here, we know that this can be written as 1 by S, and from here we will have a general expression of stability factor which is equal to beta plus 1 by 1 minus beta times dIB by diC. अब बात करें हम लोग फिक्स बायस के केस में, so in our equation which was here, you can see that हमारा IB and IC are not related to each other. So in this case we can say that यहाँ पे हमारा जो differentiation होगा that is going to be equal to 0, and from this particular general expression you can see that we are going to get the same result, that is S is equal to beta plus 1. So now we are going to calculate the value of S prime for the case of fixed bias, and we are just going to do the same things, but यहाँ पे हम लोग बस differentiate करते हुए time एक चीज जो याद रखनी है, that the constant parameters are going to change. Now they are going to be ICBO and beta. तो वापस से हम लोग same process ही करेंगे, from which we are going to get the value of S prime which is equal to minus beta by RB. So that was all for this video, and I will see you in the next one.